Neuro linguistic programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज़ I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा. क्योंकि I feel like I need it. क्योंकि because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan. Learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. Assalamu alaikum everyone. We are live officially. We are starting in a moment. I'm just setting up a few things and hopefully it will be ready in a minute or two. I hope there are just like, because I'm on Zoom, तो मुझे अंदाजा नहीं है इस वक्त YouTube पे कौन है और कितने लोग हैं. But we are starting. हमारा आज का जो session है, this is I'll be sharing a number of different clips from my NLP bootcamp. NLP bootcamp, it's an online home study course which was recorded in 2021. So it's a 3 days program. उसका जो last day है उसमें कुछ techniques, specific techniques हैं जो हम cover करेंगे. So I'll be sharing pieces of like different clips from that. So you will be learning number of different different techniques. NLP में जब मैंने NLP प्रैक्टिशनर मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी, दिस इज लाइक 1999 और सो, तो उस जमाने में कोई तकरीबन 77 डिफरेंट टेक्निक्स होती थी. बाय द वे NLP में जो टेक्निक्स हैं वी कॉल देम पैटर्न्स. तो उस वक्त तकरीबन 77 मुख्तलिफ पैटर्न्स हुआ करते थे. इस वक्त देयर आर मोर देन, एज फार एज आई नो, लाइक मोर देन 350 और around 400 different patterns. But जितने भी patterns हैं, these are, जो NLP की जो training होती है. So it's like when you come to my classes, you first learn skills. अब मैं इस पे भी briefly, जो पहली वीडियो आप देखेंगे उस पे मैं बात करूंगा. So you first learn skills और उन skills की ही मुख्तलिफ combination से techniques आती हैं. कोई भी शख्स अगर NLP को टेक्निक्स समझे या खाली टेक्निक्स समझे, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई शख्स ये समझे कि ये जो डॉक्टरी पढ़ना है या मेडिसिन पढ़ना है, दिस इज लाइक कुछ फार्मेसी की कुछ दवाएं जो हैं उनके नाम जान लेना है. ओके, सो बुखार हो तो ये खा लो और सर का दर्द हो तो ये खा लो और अगर ये मरहम लगा लो तो ये सारी बीमारियों का इलाज है. इट डजंट वर्क दैट वे. वी ऑल नो इट डजंट वर्क दैट वे. सो सिमिलरली NLP में भी जितनी टेक्निक्स हैं, जितने भी प्रोसेसेस आप सीखते हैं, देयर इज अ लॉट बिहाइंड दोस टेक्निक्स. ओके, सो जहां तक टेक्निक्स का ताल्लुक है, अगर आप NLP की बुक्स पढ़ें, यू विल फाइंड दीज टेक्निक्स. अगर आप NLP की यूट्यूब पे वीडियोस देखें, मेरे अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं. मैंने कई साल पहले मुख्तलिफ NLP की छोटी छोटी टेक्निक्स और इन पे कुछ सेशंस रिकॉर्ड किए थे. यू कैन वॉच देम एंड यू विल गेट एन आइडिया. मगर इन तमाम टेक्निक से पहले यू नीड सम स्किल्स. सो लेकिन यहाँ पे आप जो भी कुछ सीखेंगे, इन चीजों को यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग ऑन योर सेल्फ. यू कैन स्टार्ट यूजिंग देम ऑन योर सेल्फ. एंड रिमेंबर, मैंने कहा है अपने सेशंस में, repetition is the mother of skills. You need a repetition. So when you run a pattern once, it creates connection in your brain, but you need to repeat that pattern for you to fully and completely get it. So keeping that in mind, Ramzan, do you want to say anything before we begin? Ramzan is with me here. So, Ramzan, do you want to say anything? Yeah. Assalamu alaikum. I hope today you are going to enjoy something very unique. You are going to experience something very unique, inshallah. So, पिछले 2 सेशंस में जितना कुछ आपने सीखा है,
आई एम श्योर कि आज आप सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे. So please stay tuned with us, and I'm sure you are going to enjoy a lot today. Thank you. Okay, so thank you, Ramzan, and let's share our screens. Okay, just a moment. Got it. And this is for people in Pakistan? Yes, this is for people in Pakistan. Hello, people in Pakistan. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. If you think about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing the seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay? So, go see Kamran Sultan. He's a great guy, and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan. Today is April 11th, 2021, और आज हमारे NLP bootcamp का day 3, and today is the last day for the bootcamp. So हमने अपने पिछले sessions में NLP के कुछ basic concepts discuss किए थे. उसके बाद हमने कल कुछ language से related चीजें देखी थी. And as I said, language is such a huge topic. Neuro-linguistic programming, NLP में languages जो है ये यानी linguistics जो है, that's the central name of NLP. Okay, so it's like that's the balance between neuro and programming. So language का जो section है, that's a very, very, very important section, a very powerful session. और आज इंशाल्लाह ताला हम लोग will look into the programming part of it. Now, before we proceed, before I start, let me just quickly share some things, if you can hold for a moment. हम जब NLP में change की बात करते हैं, तो हमारा जो change का जो process होता है, it goes something like this. Okay, first we have what we call a present state. So think about any area of your life where you want to make some changes. Okay, so this could be your relationships, this could be your finances, this could be your health, this could be any area of your life. So there is something that we call present state. Present state is कि इस वक्त जो situation है वो क्या है. अगर हमारी जो present state है, if this is something that we are already happy with, so there is no requirement for change. लेकिन change में यानी present state हमारी जो होती है, ये उस वक्त problem बन जाती है हमारे लिए जब we have we set some kind of goal. Okay, so we have a desired state. तो मेरे पास अगर $100 है and I am happy with that, I have no problem. But the moment I say कि नहीं मुझे 100 नहीं, मुझे तो 101 चाहिए, मुझे तो 110 चाहिए. Now वो जो 101 जो एक additional है या 10 additional है, वो that becomes my desired state. Okay, so present state और desired state के बीच में जो space आ जाते हैं, एक मेरी मौजूदा कैफियत है
एक मेरी डिजायर्ड कैफियत है, तो मेरी मौजूदा कैफियत से लेकर मेरी जो डिजायर्ड कैफियत है उसके बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, एक गैप आ जाता है, इसको हम प्रॉब्लम स्पेस कहते हैं। ओके, और हम इस प्रॉब्लम स्पेस में एनएलपी की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस करते हैं, जो एनएलपी की आप कह लीजिए टेक्निक्स या पैटर्न्स या कोई भी किसी भी किस्म की एप्लीकेशंस करके बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं कि वो रिसोर्सेज जो हमारे अंदर है हम उनको एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम जहां हैं वहां से जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकें। तो इसको अगर हम एज ए इक्वेशन लिखें तो वी से इट्स लाइक प्रेजेंट स्टेट प्लस रिसोर्सेज इज इक्वल टू डिजायर्ड स्टेट। नाउ हमने एक बात की थी एनएलपी के जो बिलीव्स हैं उस हवाले से, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि इट्स लाइक हर वो रिसोर्स जो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की तब्दीली लाने के लिए, किसी भी किस्म की बेहतरी लाने के लिए चाहिए, वो रिसोर्स आपके अंदर मौजूद है। और कभी कभी ऐसा होता है, सो मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो कहता है जी मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, और बिजनेस करने के लिए तो मुझे पैसा चाहिए और पैसा तो मेरे पास नहीं है। ओके, सो उसके ख्याल में जो रिसोर्स है वो पैसा है। बट हम यहाँ बात करें लर्निंग रिसोर्सेज की, कि उस पैसे को हासिल करने के लिए आपके अपने पास नहीं है, बट डू यू नो समवन, मे बी अ फ्रेंड, मे बी समवन जिसको आप कन्विंस कर सकें टू हेल्प यू टू फाइनेंस। ना उसको कन्विंस करने के लिए यू नीड सम स्किल्स। अगर आप कहते हैं जी मेरे पास स्किल्स नहीं है, then you can always learn. So you have the resource to learn skills so you can convince people to finance you. Okay, so you always have the resources. Many times जब हम बात करते हैं resources की तो लोग अक्सर गलत डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, rather than looking at what they already have, they are looking at what they don't have. And as a result हमने बात की थी कि हमारा जो जहन है, हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए एक्सपैंड होने लगती है, वो चीज़ लगता है हमारे हमारे जहन में वो बढ़ जाती है। हम जिस सोच को पकड़ लेते हैं वो सोच हमारे जहन में चार्ज होने लगती है। तो अगर किसी शख्स ने अपने जहन में ये सोच पकड़ ली, ये ख्याल लेकर बैठ गया कि मेरे पास क्या नहीं है, तो उसका जहन जो है उसको और ज्यादा क्या क्या नहीं है की तरफ जाना शुरू कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फोकस करना शुरू करें कि क्या है, नाउ इट्स वेरी सिंपल बाय द वे। आपके जहन में हमने एक बात मैंने कई बार कही है पिछले 2 दिनों में, एंड दैट इज नो योर आउटकम। सो व्हेन इट कम्स टू नोइंग योर आउटकम, इट्स बेस्ट कि वो जो भी आउटकम आपके जहन में सारी, खाली उसको अपने जहन में ख्याल के तौर पे रखने के बजाय राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ओके, और उसको जब पेपर पे लिखें देन गेट एज स्पेसिफिक एज यू कैन। उसको जितना ज्यादा आप डिटेल में बयान कर सके उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरा एक प्रोग्राम है डिजाइन योर अमेजिंग फ्यूचर, इट्स अ 7 वीक्स प्रोग्राम। उसमें ये प्रोसेस बहुत डिटेल से मैंने उसमें कराया। इट्स नॉट शॉर्ट प्रोसेस कि मैं एकदम से आपको करा सकूं, मगर ये 7 हफ्ते में ये प्रोसेस होता है कि इसके अंदर बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स हैं। मैं आपको बिल्कुल एक ब्रीफ खाका दे रहा हूँ। सो द थिंग दैट यू हैव टू सी इज कि जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं, जो भी आपकी डिजायर्ड स्टेट है, अगर आप अपना वजन चेंज करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या आप अपनी फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या अपनी करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं, या आप अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करना चाहते हैं, या आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वॉट एवर, कोई क्वालिटी है जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, कोई स्किल है जिसको आप अपने अंदर मजीद इनहेंस करना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं है आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये स्किल आ जाए देन आई विल बिकम अ बेटर, आई विल बी मोर सक्सेसफुल, आई विल बी मोर हैप्पियर। सो एनीथिंग that you think that you want to develop, it will be best for you if you literally write it down. Okay, and you write it down in as much detail as possible. Okay, now इसमें एक छोटी सी एक टिप और बताता हूँ आपको राइटिंग डाउन के हवाले से। वैसे मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ डिजाइन योर अमेजिंग फ्यूचर जो प्रोग्राम है, इसकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो तकरीबन आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स और या 1 घंटे का एक सेशन मैंने एक रिकॉर्ड किया था, विच इज ऑन माई वेबसाइट। सो आप अगर उसको देखें तो दैट यू विल गेट सम आइडियाज, आपको ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन व्हेन यू राइट इट, राइट इट इन प्रेजेंट टेंस as if you already have it. Okay, so rather than writing it in future terms,
कि मेरे पास ऐसा होगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा या मेरी सेहत ऐसी होगी. Write it as if it has already happened, as if it's a reality you're living. Okay, so मेरा वजन इतना है, मैं इतनी देर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं या करती हूँ, और मेरा बिजनेस ऐसा चल रहा है, मेरी रिलेशनशिप्स ऐसे. You write it in the present tense. Okay, now इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि जैसे हम you write for yourself, not for other people. Okay, कि मैं क्या कर रहा हूँ, not दूसरे क्या कर रहे हैं. एक चीज ये होती है कि हम बड़ा खूबसूरती से ब्लेम गेम खेलते हैं कि हमारे साथ जितनी मुसीबतें होती हैं, जितनी मुश्किल होती है, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा होता है. ओके, हमारा पसंदीदा जो खेल है, कौमी खेल, वो ब्लेम गेम है. तो बट अनफॉर्चुनेटली उस ब्लेम गेम से हमें कुछ हासिल नहीं होता. ओके, उसमें हम जीत कर भी हारते हैं. सो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है. कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, फलाने ने यूं किया, मेरे हस्बैंड ने यूं किया, और मेरी वाइफ ने यूं किया, और मेरे ससुराल वालों ने यूं किया, और मेरे उस्ताद ने इसने फलाने दिमाग. इट डजंट हेल्प, इट डजंट वर्क. Okay, it may be the easiest thing to do, it may be the best thing to do in some situations for some people, but the fact is, in spite of all of that, it doesn't work, it doesn't give you anything. Okay, so think in terms of what you can do, who you want to become, and what actions you can take and you need to take, and you write them as if you're already doing it. Okay, now some people may think it would be like deluding yourself. No, this is like programming yourself, this is setting a direction for yourself. मैंने आपसे एक परसों बात कही थी कि it's like माजी जो है हमारा, वो माजी हमें सिखाने के लिए होता है, ताकि हम उससे सीखें और उससे हम अपने आप को बेहतर बनाए. हमारा जो मुस्तकबिल होता है वो हमें एक डायरेक्शन देता है. तो जब आप मुस्तकबिल के लिए कोई चीज चाह रहे हैं और आप उसके बारे में लिख रहे हैं, यू आर बेसिकली सेटिंग अ डायरेक्शन. और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई चीज रियल है या नहीं. वो रियल और इमेजिनरी चीजों पे इक्वली रिस्पॉन्ड करता है. तो मिसाल के तौर पे एक बहुत कॉमन चीज मैं सालों से हिप्नोसिस की क्लासेस में यूज करता रहा हूँ, एक बहुत कॉमन मिसाल, बहुत कॉमनली यूज होती है, और ये होती है कि अगर फर्ज करो कि मेरे हाथ में एक लीमू है, ओके, और मैं उस लीमू को जो है यूं करके उसके 2 टुकड़े करता हूँ, और उसके बाद उसका एक साइड जो है ना उसको यूं करके निचोड़ता हूँ करके, लाइक उसके चंद कतरे जो है आपकी जबान के ऊपर. ओके, एंड मे बी अचार का एक बॉटल है ना, उसको यूं खोला, उसकी एकदम से स्मेल जो है जा रही है, इट्स लाइक, या मे बी आपका फेवरेट खाना है, इट्स लाइक कोई आपके सामने लेकर आ रहा है. एंड एज दिस इज हैपनिंग, गौर करो क्या हो रहा है, गौर करो किसको इस वक्त अपने मुंह में पानी महसूस हुआ. टाइप 1 if you felt anything. किसको अचार की स्मेल का ख्याल आके मुंह में पानी आया. नजाकत से 1+. ज्यादा पानी आ गया बाल्टी भर के. Notice this, it's like 1 1 1 1 1 1 1. There are so many ones. Now, how is that? Why is that? Because your brain does not care whether it's real or not. Think of it. अगर आप if you think of your logic says यार कोई अचार नहीं है, this guy is just making it up. That's what the logic says. But your imagination says, I want that. जब भी इंसान की लॉजिक और उसकी इमेजिनेशन आपस में टकराती है, हमेशा इमेजिनेशन की जीत होती है. ओके, आप इसको यूं भी कह लो कि जब अक्ल और दिल टकराते हैं ना, तो दिल जीत जाता है. ओके, यानी सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट करो हमारे सामने खाने की चीज रखी है, अक्ल कह रही है देखो मत खाना, इतने मोटे हो रहे हो, तोन बढ़ती जा रही है, कैसे तुम्हारे बेहंगम जैसे मुआ हुआ है. दिल कहता है यार थोड़ा सा तो अकल कहती है नहीं नहीं नहीं, तुमने पहले भी कहा था, तुम देखो अपना ये एक्सरसाइज करते रहोगे, इस तुम्हें ऐसी चीजें नहीं खाओगे. दिल कहता है एक निवाला तो लिया जा सकता है, थोड़ा सा आज वॉक ज्यादा कर लेंगे, एंड देन ये अकल और दिल का जब ये झगड़ा होता है, आमतौर से जीत किसकी होती है? अकल या दिल की? इन योर केस टाइप ए अगर अकल और एच अगर हार्ट. ओके, दिल की जीत होती है तो टाइप डी एच. लेट्स सी,
Okay, so I see H, 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 H. Okay, Abdul Rahman ने दिल ही बना दिया. Yeah, most of the time, Maz, most of the times, okay, who wins? So, the thing is कि जब इंसान की imagination, so imagine कर रहे हैं हम कि मैं ये खाऊंगा, ये मजा आएगा, okay, और हमारी लॉजिक कह रही है नहीं नहीं नहीं, ये खाऊंगा तो वजन बढ़ जाएगा. इमेजिनेशन कह रही है यार आज ये अभी जबर ताजा ताजा गर्मा गर्म है, अभी ले लो 2-4 लोग में तो चलते हैं, गाजर का हलवा है यार, कोई मजाक थोड़ी है. okay? उसके ऊपर इतना सारा खोया भी रख पड़ा हुआ है. अगर आप गाजर का हलवा शौक से खाते हैं तो you can imagine what I'm saying. But what happens is whenever imagination and will conflict में आते, imagination takes over. So understanding this is a natural thing. हमारे साथ एक मसला ये होता है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अपनी क्लासेस में, हमारा जो पसंदीदा सवाल है ना, ये सवाल बहुत साल पहले की बात है. मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका आ रहा था, तो उस जमाने में एक शेख साहब मुझे पढ़ाने आते थे, उनसे मेरी ऐसी बात हो रही थी, तो मैं उनको बता रहा था कि कुछ कोर्सेज होते हैं अमेरिका में रीडिंग के हवाले से, जिसमें दे टीच यू कि आपकी मेमोरी जो है उसको फोटोग्राफिक मेमोरी और इस तरह की कुछ चीज़ें से रिलेटेड कुछ बात हो रही थी. तो मैंने उनको बताया कि जी इस तरह से लोगों ने कोर्सेज डेवलप किए हैं. तो और मैंने उनसे जिक्र किया कि मैंने सुना है कि ऐसे एक साहब थे हमारे यहाँ, हमारे आइमा में से आई थिंक इमाम हम्बल, मुझे नाम याद नहीं रहता उनका, लेकिन आई थिंक इमाम हम्बल के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी मेमोरी दी थी कि वो अगर कोई चीज़ देख लेते, कोई पर्चा देख लेते, वो उनके जहन पे नक्श हो जाता और वो नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती. इट्स लाइक फोटोग्राफिक मेमोरी. तो मैं उनसे जिक्र कर रहा था, तो जो शेख साहब ने मुझे बताया कि हमारे दौर में भी नॉट वेरी लॉन्ग अगो, लाइक प्रॉब्ली 70-80 साल पहले, तो अब्दुल रहमान से इमाम शाफी, सो इट वाज इमाम शाफी, बट उन्होंने मुझे बताया कि एक काश्मीरी साहब गुजरे हैं, हिज नेम वाज लिटिल लॉन्गर बट समथिंग काश्मीरी, बट उनके बारे में भी ये था कि वो अखबार नहीं देखते थे, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ देख लेते वो चीज़ उनके जहन पे नक्श हो जाती थी. नाउ यू नो व्हाट हमारा अलमिया क्या है? हमारा अलमिया ये है कि जब हमें इस किस्म के किसी शख्स की, किसी इंसान की कोई बात पता चलती है, तो हम कहते हैं ये अल्लाह ताला का उनके साथ खास करम था, ये उनकी एक करामत थी, और उसके बाद हम करते हैं चैप्टर क्लोज. उसके बाद हमारा अगला सवाल जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. हमारा फेवरेट सवाल है, वो पता है क्या है? वो है ये बताएं खाने में क्या है. Okay, because it's like Anwar Shah Kashmiri. Okay, so ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देखते हैं कि यार ठीक है आइंस्टाइन था जी, सही है, बड़ा ज़हीन था, बड़े उसने ज़बरदस्त उसने कारनामे किए, बट द फैक्ट इज कि आइंस्टाइन भी हमारे जैसा इंसान था, वो भी हमारी तरह ही पैदा हुआ था, उसने भी हमारी तरह ही पढ़ना लिखना सीखा था, उसके भी वो तमाम चैलेंजेस और इश्यूज थे जिंदगी में. अगर उसने कोई काम अनोखा किया है तो वो यहाँ क्या कर रहा था, उसको स्टडी करते हैं. आपने सुना होगा कि आइंस्टाइन का जो दिमाग था उसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था सालों, उसको स्टडी करने के लिए कि वो था क्या, उसके दिमाग में ऐसी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी. मुझे नहीं पता इफ इट इज ट्रू, लेकिन द थिंग इज दिस कि अगर हम किसी शख्स में कोई क्वालिटी देखते हैं, कोई इसमें कोई एक्सेप्शनल चीज देखते हैं, तो हम जिस वक्त ये कहते हैं कि ये इस पे अल्लाह का खास करम है और हम अपना चैप्टर क्लोज कर देते हैं, हम अपना नुकसान करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको सीखें, बजाय इसके हम उसको जानने की कोशिश करें. और आज के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, तो ये अलमिया इंतहाई कैंसर की तरह खतरनाक हद तक बढ़ चुका है. और इस वक्त हाल हमारा ये हो गया है कि हम सीखने की भी कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते. आज तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं और उस पर अपना नाम लगा के लोगों से तारीफ बटोरने की कोशिश कर रहे होते हैं. किसी ने कुछ काम किया, किसी ने कोई अच्छी चीज लिखी, किसी ने कोई चीज अच्छी कही, टू द पॉइंट मैंने देखा कि ज़िया-मुद्दीन, अगर आप लोग जानते हो, आपने सुना हो, सच अ नाइस स्पीकर एक्चुअली. उन्होंने बहुत सारी अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसको पढ़ा है. यूट्यूब पे आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी जिसपे उन्होंने बहुत खूबसूरती से, उनका अंदाज़े बयान जो है बहुत खूबसूरत है. मैंने देखा एक हजरत को कि उन्होंने
ज़िया-मोयुद्दीन के पढ़े हुए किसी कलाम को वॉइस ओवर करके अपनी वीडियो बना के उसको वायरल किया है। आई मीन जस्ट इमेजिन किस हद तक हम लोग घटिया लेवल पर सोच रहे हैं इस वक्त कि हमारा मकसद जो है कुछ क्रिएशन खत्म हो गया कि हम कोई बेहतर चीज क्रिएट करें, हम सिर्फ तारीफ बटोरने के लिए लग गए। ओके, एंड दिस इज पैथेटिक एक्चुअली। एंड माय होप इज कि आप as you're listening to me and becoming aware of this, at least you will become conscious and stop doing that if you do it. Okay, because it's not doing you any good, it's not doing anyone any good. ये जो यहाँ पर दिमाग है ना, either you will use it or you will lose it. Okay, so मुझे याद है मैं स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो हम लोग आई थिंक प्रॉब्ली 14-15 साल के थे। सो उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर में उसका हाथ जो है कोई 4 हफ्ते के 6 हफ्ते उसको प्लास्टर चढ़ा रहा। और जब वो प्लास्टर चढ़ने के बाद उसका जब खत्म हुआ और यानी प्लास्टर हटा उसका, वो जो उसका हाथ था उसको मूव करने के लिए he had to go through some physiotherapy ताकि वो अपने हाथ के अपने मसल्स को दोबारा से इस्तेमाल कर सके। सिर्फ 6 हफ्ते में वो हाथ जो 14 साल से वो इस्तेमाल कर रहा था या 15 साल से इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ 6 हफ्ते में वो खत्म हो गया। ये जो ब्रेन है ना, ये भी एक मसल है, और इसको भी अगर हम इस्तेमाल ना करें और जब हम कॉपी पेस्टिंग करते हैं तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो हमारा ये ब्रेन जो है ये मरना शुरू हो जाता है। तो फिर हम अपने आप को चलते फिरते, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का हाल यही होता है ना कि बज़ाहिर तो जिंदा नजर आते हैं बट वो अंदर से मुर्दा हो चुके होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया होता। So when you set a goal for yourself, whether it is for you to grow personally, professionally, spiritually, and I strongly recommend work on developing yourself spiritually, because that's the highest level of development. जिसके ऊपर आप काम करेंगे, you'll find the rest of the things will automatically start settling for you. And NLP में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं teach करता हूँ जिसको मैंने यहाँ पे touch भी नहीं किया। There are some really powerful things, लेकिन वो इतनी डेप्थ की चीजें हैं कि मैं उसको यहाँ पे टच भी नहीं कर सकता। लेकिन work on yourself, work on your spiritual development. और एक चीज यहाँ पर और बताऊं, हर वो चीज जो स्पिरिचुअल की बात करती है, रूहानियत की बात करती है, रहमानियत में नहीं होती। Keep this in mind, okay? So there are lots of things, हम किसी भी चीज को जो है ना इस्लामी करके और उसको लोगों को आप देखते हैं जी इस्लामी, मैं कहता हूँ थोड़े दिन टाइम ज्यादा नहीं है जब आएगा इस्लामी शराब, ओके, इस्लामी सुअर, ओके। हमारे यहाँ जिस किस्म की हरकतें इस वक्त हो रही है दुनिया में, यू विल फाइंड दिस विल हैपन। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस अंदाज से इस वक्त हम जितना हम सोचते हैं और जितना हम अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं, आई कैन बेट देयर विल बी पीपल हु विल एक्चुअली फॉलो दोज स्टूपिड आइडियाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है ना कि लोग आखिरी वक्त में हराम को अपने ऊपर हलाल कर लेंगे। तो बहरहाल, so when you set a goal for yourself, you write it in detail, as much detail as you can, okay? So मेरा वजन इतना है, मैं इतने बजे सुबह उठता हूँ, मैं इतनी देर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करने के बाद इतना अच्छा फील करता हूँ, मेरा स्टेमिना इतना है, मेरी वेस्ट लाइन इतनी है, मैं इतनी देर रनिंग करता हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर आप फर्ज करो अपनी हेल्थ के हवाले से कोई, so Bilal says, should we write goals we want to achieve every day or once in a present tense? You write, you make a bigger goal and then you write down in specific things. So एक ज़माने में Bilal, when I was a teenager, I set a goal for myself. उस ज़माने में नए जवान होते हैं तो तरह तरह के शौक होते हैं। हमें शौक हुआ बॉडी बिल्डिंग का, और उस बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक जहन में आया यार मिस्टर यूनिवर्स बनेंगे। उस जमाने में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, एंड हमें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के हम भी फैन हो गए थे। एंड आई स्टिल बाय द वे फॉलो बॉडी बिल्डिंग है कि मुझे अब इतना वो नहीं मिलता, बट मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। लेकिन सो आई सेट अ गोल फॉर माई सेल्फ। अब उस पर क्या होता है, अब आपने एक प्लान बना लिया, ओके,
बट देन एवरी डे, सो आज मैंने शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है, आज मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, आज मैंने थाइस की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर में मैंने ये चीजें करनी है, थाइस में मैंने ये चीजें करनी है, चेस्ट के लिए मैंने ये चीजें करनी है. So that's like specifying things. So you can do the same. And then you know, आपके पास अगर लिखा हुआ होगा, then you can follow. Okay, हमने जो एक बात करें, know your outcome. So now you know your outcome, and then you start taking action. अब action क्या है इस example में, कि हम रोज exercise कर रहे हैं, and then you're tracking, noticing कि मेरा जो actions है, are they taking me closer or taking me away from it? तो if उसमें ट्रैक में क्या क्या चीज, कि मैं एक्सरसाइज कितनी करनी है, कौन से पार्ट की कितनी एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपनी डाइट में किस चीज का ख्याल रखना है, क्या चीज मैंने खानी है, क्या चीज मैंने नहीं खानी है, क्या चीज मैंने कितनी मिकदार में खानी है, किस वक्त मैंने एक्सरसाइज करनी है, कितने मैंने उसके अंदर अगर मैं रैप्स जो कर रहा हूँ तो मैंने कितने रैप्स करने. सो डिवाइडिंग दैट एंड देन फॉलोइंग थ्रू दैट, एंड व्हाट यू विल फाइंड इज कि अगर आप कोई चीज रेगुलरली करते हैं, एंड इट्स अक्सर लोग बाय द वे समझते हैं कि अगर कोई काम 21 दिन रोजाना किया जाए तो वो परमानेंट हो जाएगा. ये जो ख्याल है 21 दिन वाला, एक्चुअली एक किताब है साइको साइबरनेटिक्स, डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स एक ऑथर था, ही वाज अ डॉक्टर, एक बेसिकली प्लास्टिक सर्जन था, who noticed कि वो अपने कुछ क्लाइंट्स को अगर कोई चीज सजेशन देता तो जनरली 21 दिन के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट आती. तो उसने अपनी किताब में मेंशन किया, दिस बुक वाज रिटन समवेयर इन 1970s, अर्ली 70s, तो उसने मेंशन कर दिया कि जी 21 दिन में लोगों में चेंज आती है. तो हमारे यहाँ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, एंड उन लोगों ने इस चीज को लेके, एंड दे स्टार्टेड सेइंग इफ यू डू समथिंग फॉर 21 days, सो देयर वाज नो साइंस बिहाइंड दैट. ओके, और हम मुसलमानों के साथ एक होता है जहां पर 21, 27, 40 ये लफ्ज आए, हम ठक करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते. ओके, हमारे ख्याल में वो सडनली स्पिरिचुअल चीज बन जाती है. बट साइंटिफिकली इट हैज बीन फाउंड कि अगर कोई चीज, कोई पैटर्न तकरीबन 66 डेज, अगर कोई काम आपने 66 दिन ऑन एन एवरेज, अगर कोई शख्स 66 दिन तक कोई काम करता है तो वो चीज उसके लिए नेचुरल बन जाती है, वो उसकी जिंदगी भर करने वाली चीज उसकी हैबिट फॉर्म हो जाती है. सो 66 दिन जो है ये एक एवरेज है, ये इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो बहरहाल हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, आई विल बी शेयरिंग विद यू सम टेक्निक्स फ्रॉम NLP. और NLP के जो टेक्निक्स है, जिस जमाने में मैंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की थी, एंड दिस इज लाइक 1999, उस वक्त तकरीबन 77 डिफरेंट टेक्निक्स होती थी. NLP की जो टेक्निक्स हैं इन्हें NLP पैटर्न्स भी कहा जाता है. ओके, उस वक्त तकरीबन 77 मुख्तलिफ पैटर्न्स या 77 मुख्तलिफ टेक्निक्स हुआ करती थी. जहां तक मैं जानता हूँ आज तकरीबन 450 के करीब मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं. ओके, सो मेरी जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, उसमें हमारा फोकस टेक्निक्स पर नहीं होता, हमारा फोकस होता है स्किल्स पर. टेक्निक्स के बारे में चंद पॉइंट्स और आपको बता दूं. एक चीज मैंने ये देखी है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गलत फहमी में रहते हैं, वो समझते हैं कि NLP कोई टेक्निक्स का नाम है, कोई टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद मेरा मसला हल हो जाएगा. दैट्स नॉट ट्रू. टेक्निक्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ. सो मेरी जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है उसमें 7 दिन की ट्रेनिंग, या अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो उसमें से 21 में से 19 सेशंस जो हैं वो स्किल्स बिल्डिंग के ऊपर होते हैं. 19 सेशंस में स्किल्स बिल्डिंग पे काम होता है. आखिर के 2 सेशंस जो हैं वो टेक्निक्स के ऊपर होते हैं. ओके, और अगर आप लाइव मेरा 7 डेज का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो उसमें 6 दिन हम स्किल्स बिल्डिंग पे काम करते हैं, और आखिर का एक दिन हम लोग टेक्निक्स पे काम करते हैं. और वो लास्ट वाला दिन जो होता है वो दूसरे दिनों के मुकाबले में वैसे भी छोटा होता है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट टेक्निक्स, इट्स अबाउट स्किल्स. बेसिक आइडिया, NLP के जो फाउंडर है रिचर्ड बैंडलर, ही सेज NLP is an attitude. If you do it with the wrong attitude, it doesn't work, it will not work. So attitude जो है इसमें, that attitude is attitude of curiosity, and seeing how things work. If a person is producing a result, and let's say the result he's producing is depression, the result a person is producing is anxiety, the result a person is producing is fear,
These are negative results, but the thing is, there is something the person is doing here inside his head to get the result called anxiety, to get the result called phobia or fear or anything else. We can find out how that person is doing it and change it. So if I study a person, जब मैं किसी के साथ कोचिंग कर रहा हूँ तो आई विल सी कि ये मेरे सामने जो शख्स बैठा है ये क्या कर रहा है अपने जहन, इसके जहन में क्या हो रहा है. इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझे कोई कॉल करते हैं, कहते हैं जी मेरा मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा फलाना रिश्तेदार है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या किया जाए. और मेरा जवाब हमेशा उनको होता है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं आप कुछ भी मुझे बताते हैं, that's your understanding based on your distortion, your deletions and your generalizations about what you think is happening in their mind. जरूरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं वो उसके साथ हो रहा हो. I need to talk to that person. अगर मैं उससे बात करूंगा then I can find out उसके जहन में हो क्या रहा है. मैं अक्सर मिसाल उसमें देता हूँ जी, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, तो उसके साथ क्या हो रहा है ये जब मैं उससे बात करूंगा तभी मुझे पता चल सकता है. और तो मैं उसके ऊपर कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करूंगा, ओके जैसे मैं उसके ऊपर एनएलपी नहीं करूंगा, मैं देखूंगा उसके साथ क्या हो रहा है एंड व्हाट वुड बी मोस्ट यूजफुल. सो हो सकता है कि जो मैं टेक्निक उसके साथ यूज करूं वो उन जो टेक्निक्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इनमें से चंद टेक्निक्स हों, लेकिन मैं उन टेक्निक्स को उस शख्स के लिए कस्टमाइज करूंगा. इट विल नॉट बी जस्ट द सेम टेक्निक. सो अभी हम जब टेक्निक्स करेंगे, जो पैटर्न्स आज हम करेंगे, मैं आपको आई गिव यू अ जनरल स्ट्रक्चर. और ये जनरल स्ट्रक्चर्स जो हैं यू मे फाइंड कि जब आप इनको यूज करते हैं दे वर्क वेरी वेल विद यू, एंड यू मे फाइंड कि इनमें एट टाइम्स यू मे नीड टू मेक सम ऑल्टरेशंस. और आप एक और चीज देखेंगे कि ये जो एनएलपी की टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स में मुख्तलिफ, अगर आप एनएलपी की 10 किताबें उठाएं और 10 मुख्तलिफ ट्रेनर्स एक्सपर्ट्स की किताबें आप उठाएं, तो आपको पता चलेगा एक ही नाम की हेडिंग दी हुई है. सो फर्स्ट करें कि फोबिया क्योर, विल नॉट बी डूइंग फोबिया क्योर हियर, बट लेट्स से फोबिया क्योर. सो यू मे फाइंड कि हर शख्स जो है उसने फोबिया क्योर के मुख्तलिफ अंदाज से दिया हुआ है, बिकॉज दैट्स द टेक्निक दैट पर्सन हैज डेवलप्ड थ्रू हिज और हर ओन एक्सपीरियंसेस. ओके, तो मैं आपके साथ जो चीज शेयर करूंगा, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निक्स, और आई विल टेक यू थ्रू दोस एंड वी विल प्रैक्टिस देम so you can use them. तो हम लोग जो techniques use करेंगे, coming back to this, इसमें first let's understand something. ये जो हम बात करें कि हम resource activation की, तो ये जो resources हैं इनको हम activate करने के लिए there is something really powerful. You will find it very useful to know, that we call anchoring. और इस पे आने से पहले लेट मी जस्ट न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ब्रेन थ्रू लैंग्वेज. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी जात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज I have used one of your techniques in my sales. And it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था. क्योंकि I feel like I need it. क्योंकि because I can. Look, I am way better than I thought I would be. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी parenting बहुत improve हुई with my daughters. My relationship improved. इसके अलावा मेरे husband के साथ मेरे relationships बहुत improve हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. Assalamu alaikum everyone. I hope you're enjoying this today's training. हमारा आज का जो सेशन है इसमें अगला जो सेगमेंट था, मैंने इसमें एंकरिंग का जिक्र किया. एक्चुअली जो ट्रेनिंग में वो जो एंकरिंग वाला सेक्शन है दैट्स ओवर एन आवर लॉन्ग.
तो आई थॉट अगर इफ आई प्ले दैट तो फिर ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज ये पूरा सेशन जो है 3 घंटे का सेशन है. सो आई विल बी स्किपिंग दैट स्पेसिफिक पोर्शन. एंड जो नेक्स्ट चीज आप अभी इसमें सीखेंगे, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, स्पेसिफिक टेक्निक्स है. और जो फर्स्ट टेक्निक आप सीखेंगे, इट्स सर्कल ऑफ एक्सीलेंस. जैसा मैंने कहा कि कोई भी टेक्निक जो है, इट रिक्वायर्स रिपीटेशन 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 रिपीटेशन. You need to do these things again and again. So as you're going through this, watch carefully. I'll be taking the group through some exercises. When I'm teaching, I'm doing a lot of things जो कि conscious level पे हो रहे होते हैं, and there are a lot of things that I'm doing with my students' minds at unconscious level. So you may not be able to see that. It's perfectly okay, but just watch, go through this, and as I run any exercise or कोई specific exercise जब करवाई जा रही हो, कोई pattern में करवा रहा हूँ, just follow that. Okay, and we will start this. हमारी आज की जो ट्रेनिंग अभी भी तकरीबन more than an hour long. अभी भी इसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं. So you will be learning number of different patterns. और उन पैटर्न्स में कुछ कोई 20 मिनट के अभी है, कोई कुछ सेगमेंट तकरीबन आधे घंटे के. सो इट्स लाइक देयर आर 3 more sessions coming up. So stay tuned, stay with this, practice this. इन चीजों को अप्लाई करें. एप्लीकेशन के बगैर कुछ नहीं होता. If you're sitting and taking notes and thinking that you're going to use it someday, forget it. It doesn't work that way. I've spent my life learning and training and doing these things. I know it doesn't work that way. So if you want to really truly benefit from this, do it. Okay. Apply this, do it right now, and you will notice changes. Right now, I guarantee, even with these small things that I'm sharing here with you, if you do them, you will feel change. You will find change. Okay. So, Ramzan, do you want to say anything before we proceed? Ramzan, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Inshallah, I'm sure आप तमाम लोग बहुत 4th डे है हमारे पास, और 4 दिनों से हम कनेक्टेड हैं आपस में. तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि आगे क्या है. ये तो शॉर्ट एक्सरसाइजेस थी, शॉर्ट मैसेजेस थे, शॉर्ट कोर्सेज थे. अब आगे क्या है? तो आप में से वो तमाम लोग फैसला कर चुके हैं कि आगे बढ़ना है, तो मैं आपको अनाउंस करता चलूं कि इसी महीने, मई के महीने में 22 मई से एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट आपके लिए हो रहा है. और ये जो ट्रेनिंग है वो कहलाती है लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग. लाइसेंस्ड एनएलपी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग. सो ये कामरान सर बजाते खुद कंडक्ट करेंगे. और अभी जितना भी पार्ट आपने इन 3-4 दिनों में देखा है, वो तमाम इसी प्रैक्टिशनर का पार्ट है. तो आप अगर इसको बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हैं, स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं, स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप जरूर इस कोर्स के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर एनरोल हो सकते हैं. इस ट्रेनिंग की डेट्स क्या है, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और कितना आउटरीजियस इस वक्त हमारे पास कुछ डिस्काउंट्स आपके लिए अवेलेबल है, बोनस अवेलेबल है आपके लिए. तो आप में से वो तमाम लोग जो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक ट्रेनिंग है, जो कि लाइफ चेंजिंग है, आई एम श्योर, तो आप कामरान सर से या मुझसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं. हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. तो कामरान सर का जो नंबर है 0300-219-8031, और मेरा जो नंबर है वो है 0345-283-1517. इस ट्रेनिंग के बारे में या मजीद एनएलपी के बारे में आप कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमसे किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं, वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. सो इंशाल्लाह आप दोबारा मुलाकात होगी. तब तक आप जरूर कनेक्टेड रहिए हमारे साथ. थैंक यू सर. कामरान सर.
Got it. And this is for people in Pakistan? Yes, this is for people in Pakistan. Hello, people in Pakistan. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. If you think about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing the seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay, so go see Kamran Sultan. He's a great guy, and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Neuro-linguistic programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज़ I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था. क्योंकि I feel like I need it. क्योंकि because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. And this is a technique जो कि एंकरिंग की टेक्निक्स में से एक टेक्निक है, सर्कल ऑफ एक्सीलेंस. सर्कल ऑफ एक्सीलेंस यू कैन यूज टू एक्सेस एनी स्टेट. जो अभी आपने उस ऑडियो में जो चीज एक्सपीरियंस की है, उसी को आप इस टेक्निक के जरिए अपने लिए कर सकते हैं. इनफैक्ट आप इसको दूसरों को भी करवा सकते हैं. इसको कराने में थोड़ा सा आपको चंद चीजें मजीद जानने की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप गौर करें यू विल बी एबल टू डू दैट इंशाल्लाह. सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में first you think about the state that you want to experience. Let me just share with you these steps here. And by the way, ये जो चीजें हैं, those of you who are attending live, and as I said, there is no manual, so you may want to take screenshot of these instructions if you want, तो ताकि आपके पास in future है. और अगर आप already आपने recording भी इसकी purchase की हुई है, तो आपके पास इसकी चीजें already होंगी. So decide the state of excellence you want to achieve. You want to feel, decide how you want to feel. You want to be more confident, or you want to be more loving. You want to be more caring. You want to be more focused. You want to be more excited. You want to be more energetic. You want to be more ecstatic. You want to be more of anything that you want. Okay. So you decide the state you want to experience. State से मतलब है हमारा ज़हन की वो कैफियत जो आप experience करना चाहते हैं. Then think of a color that represents that state for you. Okay. So कौन सा रंग आपके लिए उस कैफियत को रिप्रेजेंट करता है? मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कैफियत मुख्तलिफ रंगों में हो सकती हैं. आपके लिए उस कैफियत को अगर आप किसी रंग से रिप्रेजेंट करें, वो कलर क्या होगा? Select any color you want. Okay. Now here's an interesting thing कि इसमें
मैंने अपनी क्लासेस में मैं बहुत बारी चीज करवाई है, और मैंने जब लोगों को बोले think of your a color that would represent, sometimes people select something like black, okay, और then इसमें अब अगला जो स्टेप आता है उसमें हम क्या कहते हैं, you imagine a black circle on the floor. अब वो जो ब्लैक सर्कल है, कराची में अगर आप रहते हैं, और आई बिलीव लाहौर में भी आपको रोड्स पे बहुत सारे ब्लैक सर्कल्स नजर आते होंगे थोड़े थोड़े फासले से, okay, so that may not be a good idea. So I suggest select some color that may represent something better for you. Okay, so think of a color that would represent a good positive state for you. Okay, then imagine a circle on the floor in that color representing that state. Okay, recall a past vivid experience when you experience that state. Imagine the color in circle getting brighter as state gets stronger. When it gets most attractive, step into the circle, make a fist while saying yes. Enhance the state by doubling it, tripling it, quadrupling it. Make appropriate changes in your physiology, breathing, facial expressions. Abhi, I'll take you through this, you will understand this. Step out of the circle and open your fist, and step into the imaginary circle and relive that state. Think of a future situation, and this is the programming part. Okay, NLP की जितनी भी techniques है, उसका जो last step है, that's called future pacing. Okay, so हम कोई resources past से हम लेकर आए, उसको present में हमने experience किया. अब एक future situation है जहां मैं चाह रहा हूं कि ये state हो. I'm going for this interview, I want कि मेरे पास ये चीजें आओ. I'm going for this meeting and I want कि ये चीज मेरी, ये कैफियत मेरी वहां पर हो. Okay, so ये particular जो चीज है, ये particular जो technique है, बहुत साल पहले मेरे एक प्रोग्राम में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने he used it very effectively. He was a government servant, और उनके साथ क्या होता था कि he came and he told me this himself. He said कि जी ये होता है कि गवर्नमेंट का कराची में KMC के डायरेक्टर थे वो. He said कि जी मैं सुबह ऑफिस जाकर बैठो और लोगों की एक लाइन लगी होती है कि जी मेरे इलाके में जी गटर की लाइन टूट गई और पानी की लाइन नहीं आ रही और ये मसला वो मसला, सारा दिन ही से लोग आके झक. तो he said कि मैं by the end of the day मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा थका हुआ फील करता था. So I decided to use this technique. So he thought of a circle of relaxation. Okay, a circle of being totally composed and totally relaxed. और उन्होंने उसको एक अपना कोई color दिया, and he imagined that circle around his chair. And he said कि अब मैं जाता हूँ और मैं उसके गिर्द वो circle imagine करता हूँ and just step into that. वही सारी चीजें हो रही हैं सालों से जो हो रही थी, उसी तरह से लोग आके वही मसाइल उसी तरह बता रहे हैं, सब कुछ वही है. But he said मैं उन चीजों को बहुत calmly ले रहा हूँ और बहुत easily handle कर पा रहा हूँ. Okay, you can think of it like, for example, imagine a circle of love, a circle of understanding. What if आप जब घर से बाहर से आते हैं, घर की जो भी सारी बाहर के झगड़े मुश्किलें, but when you enter your home, आप अपने घर का जो डोर नॉब है, when you press it, और अगर आपकी जो when you open it, और अगर आपकी जो बेल है, डोर बेल है, when you press it, suddenly your state changes. You get into a state of calmness, relax, and then you step in your home with that positive state. What do you think? Do you think that could be useful? हम बाहर के झगड़े अगर हम बाहर ही छोड़कर आ जाएं और जब हम घर में आए तो हम different state में हो. What if you have a circle of love in your bedroom, a circle of understanding when you meet your your loved ones? Do you think that can be useful rather than circle of agitation? Okay, think about that. Okay, so that's the thing, by the way. अक्सर लोग जो होते हैं ये techniques की, it's not about just techniques. Understand इस technique को आपने कैसे modify करना है. Okay, so you decide आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं. Now I'll take you through this process. Okay, and remember किसी भी process को करने के लिए you need to do it more than once. Okay, repetition is the mother of skill. Repetition is the mother of skill. So if you have recording of this, I suggest do this repeatedly again and again. You will find it will help you. Okay, so think about this. Think about the state you want to experience.
first decide it on your own. अच्छा, और जिस वक्त अभी हम करेंगे इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो और खड़े होकर आपने एक कदम चलना होगा. ओके, तो इतनी स्पेस रखें कि आप खड़े होने के बाद एक कदम आगे बढ़ा सकें. So decide what state you want to experience. Decide कोई रंग जो उस कैफियत को आपके लिए रिप्रेजेंट करता हो. लाल, नीला, पीला, हरा, it's your choice. कोई specific shade है उस रंग का, select that. It's perfectly okay. Whatever you select is yours. Okay. Now, सोचें, याद करें जिंदगी का कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा जब आपने उस कैफियत को एक्सपीरियंस किया था. because you know it, because you know कि ऐसी कोई कैफियत है, that means आपके ज़हन में यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस है. कभी कभी लोग कहते हैं जी मेरी ऐसी कोई है नहीं. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उस कैफियत के माने ही नहीं पता हो. अगर आपको मालूम है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ think of a time when you felt loved and you understand this word feeling loved, that means there is a reference here in your mind somewhere that you're able to understand what love is. When someone says कि जी I don't know what it is like to be loved, it's like your question, if you did not know, your question would be ये क्या चीज होती है. The fact is at some level. You're not focusing on it. Okay? देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि दो चाइनीज लोग आकर बात करने लगे चाइनीज में और आपको चाइनीज जबान नहीं आती, तो उनकी जो बातें होंगी they'll not make any sense to you. They'll not make sense to you because आपके जहन में उनकी जो आवाजें निकाली जा रही हैं उन आवाजों के कोई माने नहीं होंगे. लेकिन अगर आपको चाइनीज जबान आती है और वो चाइनीज लोग बात करें तो आपको उनके मुंह से निकलने वाली अजीब चाव माव की जो आवाजें होंगी they'll make perfect sense to you. क्यों? बिकॉज आपके जहन में यहाँ पर रेफरेंस है. सो अगर if I say think of a time when you felt loved, और मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, if when you felt loved and the word love makes sense to you, that means there is some reference. That is the only reason you are able to understand. If there is no reference here, you'll say ये चाव पाव वाली कुछ मेरी नहीं समझ में, ये क्या चीज होती है love. You get this? So ये अक्सर लोग मैंने जब ये ऑडियो भी दिया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इस किस्म की मैसेज किया, सर आई डोंट नो, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई पॉजिटिव नहीं है. प्लीज स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दोस क्रैपी स्टोरीज. Okay, so once you have this, then you can stand up. Okay, now इस वक्त जब ये कर रहे हैं, so I'm going to ask you to imagine a circle आपके सामने, in front of you. बच्चों के कभी आपने वो हुला हूप्स देखे? मेरे ऑफिस अगर आप आए, मैंने अपने ऑफिस में भी रखे, तो हुला हूप्स जो होते हैं बच्चे पहन के खेलते रहते हैं. You can imagine एक हुला हूप है आपके सामने. It's perfectly okay. Okay, you can draw a circle on the floor if you want, with a marker or a chalk, doesn't matter, if that helps. If you want, you can actually place a piece of paper and uske upar circle draw kar le. That will be perfectly okay. It doesn't matter. Or if you can just simply use your imagination, go ahead and use that. NLP में किसी भी चीज को करने का कोई एक तरीका नहीं है. It's all about having more flexibility. So whatever you find most useful for you is perfectly okay. And it's बिल्कुल मुमकिन है एक चीज जो, so for example सज्जाद के लिए एक चीज बिल्कुल perfectly okay, वो चीज मेरे लिए ना हो, और जो चीज मेरे लिए okay है वो सज्जाद के लिए ना हो. So and that's perfectly okay. So if something works for Sajjad, he can use that, and something works for me, I can use that. So मैं ये कहूँ नहीं यार सज्जाद का ज्यादा अच्छा है और मेरा खराब है, या मेरा अच्छा और सज्जाद का खराब है. It doesn't work that way. Whatever works for you works for you. So you imagine that circle, okay, in this color जो भी आपके लिए है, and recall a time when you experienced this state. Recall that time in your mind as clearly as you can.
Now look at that circle. उसको देखते रहें अपने सामने, अपने जहन में याद करें उस वक्त को, उस लम्हे को, उस वक्त को जब आप अपने अंदर उस कैफियत को महसूस कर रहे थे। देखें जो आप उस वक्त देख रहे थे, सुने जो उस वक्त सुन रहे थे, महसूस करें जो उस वक्त महसूस कर रहे थे। Recall it as clearly as you can, as much as you can. Recall what you can recall easily. Remember what you can remember easily. Recall it as vividly as you can. Now, if there are more than one experiences of that type, that's perfectly okay. Recall, more than one experiences when you were experiencing that. And as you do that, keep looking at that circle in front of you. Keep looking at that circle in front of you. And as you keep looking at that circle, देखते रहें उस circle को अपने सामने, उसको देखते रहें, अपने जहन में याद करें उस वक्त को, उस लम्हे को, and imagine करें इस circle में से वो जो रंग है वो रोशनी एक निकल रही है, वो रोशनी जैसे एक ऊपर की तरफ उठ रही है, एक रोशनी जैसे आपने देखा होगा मॉल्स के आगे जो बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगी होती हैं जो बादलों तक जा रही होती हैं. I want you just imagine that ये जो लाइट है निकल रही है और ये लाइट जो ऊपर की तरफ जा रही है. It's so bright and it's becoming even more brighter and even more brighter and it's becoming more and more attractive. As it gets brighter, as it gets more attractive, एक कदम आगे बढ़ा के step into this circle, step into that circle. As you step into that circle, now set an anchor for yourself. Make a fist or just join your thumb and your third finger. Just set an anchor for yourself and close your eyes. And now imagine अब ये जो रंग है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी एड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है. Imagine ये light जो है it's going in your body. Imagine this light is stepping in your body. Imagine this light's going inside your body. और तस्वीर करें कि जैसे ये रोशनी ये रंग आहिस्ता आहिस्ता आपकी एड़ियों में आपकी पिंडलियों में धीरे धीरे आपकी पिंडलियों से आपके घुटने आपकी राने आपकी कमर आपके पेट आपका सीना आपके कंधे आपके बाजू आपकी गर्दन आपका चेहरा आपके पूरे जिस्म में ये रंग फैलता जा रहा है. Imagine your color it's spreading into every muscle in your body, every bone in your body, every cell in your body, every fiber, every cell, every atom in your body. Even उन atoms के दरमियान जो spaces हैं, ये रोशनी ये रंग मुकम्मल तौर पे इसमें फैलता चला जा रहा है. And as it gets inside, it gets stronger and stronger. Now fire that anchor again. Stack that feeling, make it even stronger. Now, कैसा अगर ये feeling जहां है यहां से अगर ये दुगनी हो जाए, how will you stand? Stand that way. आप किस तरह से खड़े होंगे अगर ये एहसास आपका दुगना हो जाए? Will you be looking up or down? आपके चेहरे के तासुरात कैसे होंगे? Bring that expression on your face. अगर ये feeling 4 गुना ज्यादा strong हो जाए, अगर ये कैफियत 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, how will you breathe that way? आपकी सांस कैसे चलेगी? आपका चेहरा कैसा होगा? आपके चेहरे के तासुरात कैसे होंगे? Bring those expressions on your face. कैसा अगर ये feelings आपकी 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए? And as this feeling gets stronger and stronger, how will you stand? How will you breathe? Now fire that anchor again. Set, join your thumb and your middle finger or your fist, whatever आपने जो भी anchor set किया है, fire it again, set it again. Stack this feeling. कैसा अगर ये feeling आपकी हर सांस पे बढ़ती चली जाए? कैसा this is just the beginning. अगर ये सिर्फ start हो और यहाँ से ये feeling जो है दुगनी हो जाए, how will it be for you? आप फिर कैसे खड़े होंगे? अगर ये feeling जहाँ है यहाँ से 4 गुना हो जाए, अगर ये feeling जहाँ है यहाँ से 8 गुना 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, what will it be like for you? Fire those anchors.
How will you stand? How will you walk? How will you talk? Imagine yourself walking with this. Now, stop. Open your eyes if your eyes are closed and step back. Leave that circle. Circle se bahar aa jaiye and just step back. Okay, now again, look at that circle again in your mind, in your imagination. Look at that circle again. And as you look at that circle, in your mind, in your imagination, imagine uska rang jo hai, it's getting brighter. Imagine iska rang jo hai, it's getting more and more attractive. And as it gets more and more attractive, then ek qadam aage badha ke step into that circle. And as you step into that circle, apply your anchor, fire your anchor. Fire your anchor. And notice as you do, आपकी वो कैफियत वापस आती है. Now, as you experience this, I want you to think of a future time. कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आप चाहते हैं ये कैफियत आप में हो, कि अगर आप उस सिचुएशन में इस कैफियत के साथ हो तो उस सिचुएशन को आप बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से एक्सपीरियंस करेंगे. सोचिए अपनी मुस्तकबिल की कोई ऐसी सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन सबसे पहले लीजिए एंड तस्वुर कीजिए कि आप जब उस सिचुएशन में जा रहे हैं वहां पर यू हैव दिस सर्कल. You step into this circle, you apply this anchor, and suddenly you get into this state. Think of another situation, कोई और situation, जहां पे you want to experience this. Imagine this circle. Now, if you want to get fancy, there's something else that you can do. You can take this circle and imagine ये circle जो ज़मीन पे नहीं बल्कि it's right above you. It's over your head. और ये रोशनी जो है, ये ऊपर से नीचे आपके पूरे जिस्म के अंदर जा रही है. So it's like you wear it as a hat on your head as you get into that situation. Okay, now so just step out and come back. You can, come back to your seat. Okay, so how was it? How was the experience? What did you find? What did you notice? Too good. Amazing. It was amazing, really. Good experience? Amazing experience? Okay. सर एक टाइम ऐसा आया था जब बाकायदा हंसी छूट गई थी. लाइक yes, I'm so confident in doing this confidently. Good. एक टाइम ऐसा बीच में आया जिससे बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा मेरी इन चीजों से वो खुश होते हैं और करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा सेंटी भी हो गई. उस तरह से फील हो रहा था. Okay. What else? Ujala says immense happiness. Okay. Nasrullah says awesome. Zahur says awesome. Nida says exuberant. Yo. Hina says it would be great. Achhi shayad pehle gaye kuch. Initially a bit overwhelming, Moaz says. Later I felt being positive. Okay. Awesome, therapeutic, transcend. Good. So the thing is this, it's like we have done it once. Okay. Repetition is the mother of skill.
आप इसको जितना ज्यादा रिपीट करेंगे यू विल फाइंड उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके और इसको आप मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हैं, आप अपने आप से कर सकते हैं, इसको खुद से कीजिए, बार बार कीजिए। सो इट्स लाइक हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ कोई खराब चीज होती है ना, हम उसको खूब रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। जब हम बात करें ना अपनी स्टोरी, अरे यार तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, यार मैं उस दिन वहां जा रहा था, यू नो मेरे साथ मैंने मेरे आलू छोले लिए थे यार, वो जो छोले थे ना बिल्कुल ठंडे थे, इतना मेरा उसकी वजह से दिल खराब हो गया। तो दूसरा यार क्या बताऊं यार, उस दिन मैंने आलू छोले की चाट ली थी यार बिल्कुल ठंडी। ओके इतनी बार हम एक छोटी सी चीज को लेकर उठाते हैं, और कोई हमारे साथ अच्छी से अच्छी खुशी हो जाए और हम उसकी बातें में छोड़े, नजर लग जाएगी, किसी को बताते नहीं। ओके अच्छी बात किसी से शेयर नहीं है ना, नजर लग जाती है, बड़ी जल्दी नजर लगती है हमें। तो यार ये बुरी चीजों को नजर क्यों नहीं लगती तुम्हारी? हाँ उस पर कोई नजर नहीं लगाता, अच्छी चीजों में नजर लगाता है। ये नजर एक डायरेक्शन में क्यों चलती है ये बताओ? okay? ये नजर हक है, बरहक है, मगर जितना ज्यादा हमको लगती है उतनी ज्यादा नहीं होती है। ओके हर एक हमें हमारे ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ है कसम से, यानी एक हर एक हम सबको फिक्र है कोई जादू कर दे मेरे ऊपर, सब फारिग हैं, सब पूरी दुनिया फारिग है मेरे लिए, मेरे ऊपर जादू करने के लिए तैयार बैठी है, सारी दुनिया फारिग है मेरे ऊपर नजर लगाने के लिए बैठी है, यार मैं बड़ा खास हूँ। यार क्या है यार कसम से, यानी हमें शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें सोचते हुए। Anyway, so let's move on and we will do the next thing. So I'll stop recording here. So we have new. This is something 110% possible. And you imagine yourself as you want to be. जो लोग करना चाहते हैं, they don't buy into their excuses. They look for ways and do things. How to feel wonderful is a very, very simple technique, a very easy to do technique, a very easy to do pattern. And again, it needs repetition. So how do we do that? इसके बहुत simple से steps हैं. Number one, you think of a time when you felt wonderful. अब और करें, हम क्या कर रहे हैं? We are just focusing on some time in the past. हम anchoring में क्या कर रहे हैं? We are thinking of a time when you felt strong. यहाँ पर you think of a time when you were feeling wonderful. You close your eyes and recall a time in vivid details. Okay. Now, एक चीज कभी कभी लोगों को होता है कि जी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं नजर आता, मैं भी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कुछ नजर नहीं आता. That's how it works. ओके ओके आंखें बंद करके मुझे वाकई में, मुझे अभी आप लोग कोई कैमरा कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखें बंद है. ओके सो आंखें बंद करके नजर नहीं आता. You know, it's like the brain cannot not imagine. The brain cannot not imagine. Okay, so मिसाल के तौर पे कल मैं जब क्लास खत्म हुई तो यहाँ से मैं निकला, मैं हाईवे पे भी जा रहा था, तो मैंने देखा ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे एक ट्रक आ रहा था, जो इट्स लाइक रेड कलर का बड़ा ट्रॉलर था, एंड इट वाज कंप्लीटली रेड था, और उसके ऊपर इट्स लाइक वाइट से एक सर्कल बना हुआ था, और सर्कल को जब मैंने दूर से, मुझे खाली वो सर्कल सा नजर आ रहा था, जब वो जैसे जैसे वो ट्रॉलर करीब आता चला गया, देन आई सॉ कि उसके ऊपर जो वो सर्कल है वो बेसिकली एक स्माइली फेस बना हुआ है. और जब वो ट्रक बिल्कुल करीब आया, देन आई रियलाइज कि उसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी ये जो गाने चल रहे थे, जैसे हमारे यहाँ बसों के अंदर चल रहे होते हैं, और वो जो ट्रॉलर था उसके अंदर बाकायदा वो जो झालर सारे जो बसों में हमारे यहाँ टंगे हुए होते हैं, वो झालर उसके अंदर टंगे हुए थे.
एंड जब मैंने एकदम से उसको देखा, है ना, वो जो ड्राइवर था वो तो अपना ही कोई जैसे कराची में पठान भाई चला रहे होते हैं, वो वही कोई पठान ही उसके अंदर चला रहा था, और वो था कुछ जरा लग रहा था, उसने करके उसने निस्वार अपनी निकाल के ऐसे करके यूं फेंकी. ओके, नाउ just a moment. I made this up, by the way. But as I made this up, did you see a red trawler in your mind or not? Say yes or no. Okay. So, yes. Okay. Everything. How is that possible? Okay. Sometimes you'll say, "Ji, मैं imagine नहीं करता, मेरी imagination नहीं है." That's wrong. क्या होता है, हम ये समझते हैं कि जब हम आंखें यूं बंद करेंगे तो हमें वैसे नजर आएगा जैसे हमें खुली आंखों से आता है, बट द फैक्ट इज ब्रेन कैन नॉट इमेजिन. सो जब ये लिखा होता है कहीं पे रिकॉल और इमेजिन, यू आर सिंपली आस्किंग यू टू डू समथिंग, you cannot not imagine. See, everyone is saying. So Sajid says not, but in US, yeah, that's because depends आपके यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किस चीज के. आपका ब्रेन किसी भी चीज को जब इंटरप्रेट करेगा, ये एक इंफॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल आ रही है आपके पास, जब वो आपके जहन में जाएगी, it will interpret only based on the references that you already have. मैंने कल एक चीज आपसे कही थी, perception is projection. ये जो ब्लू कलर है वो बाहर नहीं है, वो यहाँ है. वो जो रेड ट्रक है वो वहां नहीं है, वो यहाँ है. ओके, इस चीज को वैसे एक बात बताऊं साजिद, since you mentioned this, since you mentioned but not in US, वो बुराई जो हमें किसी में नजर आती है, वो खराबी जो हमें किसी में नजर आती है, do you know वो खराबी कहाँ होती है? So it's like we don't see people as they are, we see people as we are. ओके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस, मुझे नहीं पता इस हदीस की सेहत का, लेकिन बहुत मशहूर वो होती है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है. आज माहिर नफ्सियात एक बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि the good you see in others is you, the bad you see in others is you. अगर आपको मुझ में कोई अच्छाई नजर आ रही है ना, तो वो आपकी अपनी रिफ्लेक्शन है, और अगर आपको मेरे अंदर कोई खराबी नजर आ रही है, ट्रस्ट मी, वो भी आपके अपने अंदर की रिफ्लेक्शन है. सो इसीलिए यानी बहुत सारे लोग जो हमारी जिंदगी में आते हैं, जो बज़ाहिर हमें खराबी होते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, कभी गौर कीजिएगा. मैंने ये चीज़ अपनी ज़ाती तौर पे मैंने एक्सपीरियंस की है. मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ते हुए मैंने किसी को देखा, यार ये इसको देखो, ये अपने पैर ऐसे करता है, या हाथ अपने यूं करता है, या ये फलानी हरकत कर रहा है. बट देन आई नोटिस्ड कि यार आई एक्चुअली डू दैट, and I could only notice because I was doing it but not realizing that I'm doing it. वो खराबी मुझे उसमें नजर आ रही थी because मेरे अपने अंदर थी. And वो शख्स जो था, अल्लाह ताला ने उसको मुझे दिखाया, वो मेरे लिए एक चांस बना अपने आप को करेक्ट करने का. उस पे फतवा लगा सकते थे हम बड़े अच्छे से, जाहिर है दाढ़ी है तो फतवा तो लगाया जाए, जायज बनता है ना. Okay? But then I realized it's the mistake in me. हर वो शख्स जो मुझे मिला जिसमें मैंने कोई बुराई देखी, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, वो बुराई मेरे अपने अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है. मुझे उसको करेक्ट करने की जरूरत है. उसमें उसको तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसको तो कर सकता हूँ. तो बहरहाल ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर व्हाट वी डू इज सिंपली दिस. यू थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेल्ट वंडरफुल, ओके, एंड देन क्लोज योर आईज एंड रिकॉल अ टाइम इन विविड डिटेल. See the image clearly, hear sounds loudly, remember the feeling as they were then. So recall it as clearly as you can. Okay. Then imagine yourself stepping into that experience and imagine being in that memory as if it is happening now. See what you would see, hear what you'd hear, feel how good you'd feel. Make that color stronger, brighter. If that helps, notice how you were breathing back then. Breathe that way now. Pay attention to the wonderful feeling in your body and get a sense of where the feeling starts, where it goes, and the direction it moves in. Imagine taking control over the feeling and spinning it faster and faster and stronger throughout your body as the feeling increases. Think of a time in future. Last step, that's the programming part. That's the programming for a future event. So think of a future time where you could use these good feelings
Spin these feelings throughout your body as you think about the feeling in and the things you are doing over the next few weeks. Don't be too surprised if you find yourself feeling really good for absolutely no reason. Okay, now here's an interesting thing, by the way. Many times people are looking for reasons to feel good. ना जब मेरा वो paycheck मिलेगा ना, फिर I'll feel good. जिस दिन मेरी वो सेल हो जाएगी ना, फिर I will feel good. जब वो फलाना इवेंट हो जाएगा तो फिर I will feel good. You know, if you realize, by the way, you were born happy. Allah Ta'ala made you happy. कभी आपने गौर किया जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नेचर से करीब तरीन होते हैं, जो छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं, वो खुश होते हैं, वो टेंस नहीं होते, वो टेंशन में नहीं रहते, बिकॉज जो इंसान का बुनियादी जो नेचर है वो खुश है, खुशी है, वो गम की कैफियत नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं ऐसे जनाजों में गया हूँ जहाँ बाप का इंतकाल हुआ है, बाप का जनाजा रखा हुआ है, मगर उसके छोटे छोटे बच्चों ने पता ही नहीं है क्या हो चुका है। वो गली में अपने कजन्स के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे, छोटे छोटे से बच्चे, उसे पता ही नहीं बच्चे को क्या हुआ है। हम कहते हैं जी इसको होश नहीं है, उसका उसका होश, जैसे हम कह रहे हैं होश नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जो बुनियादी नेचर है, इंसान की जो बुनियादी सिफ्त है, वो खुश रहना है। तो हम खुश क्यों नहीं रहते? जब हमारे जहन में वो सोचों के बादल आते हैं, सोच की एक लहर आती है, और उस लहर को बजाय इसके कि हम जाने दें, गुजर जाए, हम उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और हम जब उस पर फोकस करते हैं वो चीज़ हमारे जहन में मजीद बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप कभी गौर करें, छोटा बच्चा है, अगर फर्ज करो आपके घर में, कभी ऐसा होगा कि बच्चा जो है ना बड़ा जिद पर चढ़ जाती है, उसको वो रोना धोना ही करता है, बट आप उसको इग्नोर कर देते हैं, वो रोएगा 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 एंड आप टोटल इग्नोर करते हैं। What happens when you do that? Tell me what happens. What happens when you do that? I'm sure आपने कभी ना कभी बच्चों के साथ ऐसा किया होगा, मे बी आपके साथ कभी आपके बड़ों ने ऐसा किया होगा। Okay, what happened when that happened? Tell me that. You can unmute yourself quickly. Tell me क्या हुआ था? चुप कर जाता वो and he start playing. Yeah. Okay. थोड़ी देर बाद चुप कर जाता। Ujala says the kid stops crying. That's exactly what happens. Okay. Sajid says it became normal again. थोड़ी देर बाद खुद से चुप हो जाएगा, ध्यान बदल जाता है उसका, वो दूसरी तरफ लग जाता है। क्या हुआ कि देखो, हम घर में वो एसीज लगाते हैं ना, अब एसी जो है हमने टेम्परेचर सेट कर दिया कि जी 21 पे जो है वो हमने सेट कर दिया, फर्ज करो। अब जब वो 21 पे टेम्परेचर आ गया तो उसका कंप्रेसर रुक गया। ओके, अब रूम का टेम्परेचर जो है 21 के ऊपर सेट है, दरवाजा खुला, खिड़की खुली, कोई आया कोई गया, तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो 21 से 22 23 पे आ गया। तो जैसे ही चेंज हुआ कंप्रेसर किक्स इन और दोबारा से कूलिंग शुरू हो गई। जब वो दोबारा 21 पे आ गया कंप्रेसर रुक गया। बिल्कुल उसी तरह हमारे अंदर हमारा जो बेसिक जो बिल्ट इन हमारा जो स्ट्रक्चर है, अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया ना, सो इट्स लाइक खुशी, हमारा खुशी का एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। कोई इवेंट हुआ, हम इस डायरेक्शन में चले गए। अगर हम उसको छोड़ देते हैं और हमारे जहन में जो आने वाली सोच है हम उसको छोड़ देते हैं, तो ये वापस कंप्रेसर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है एंड दोबारा से हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो आता है, कोई इवेंट हुआ और हम इधर गए, हम क्या करते हैं, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और हम उस पर फिर सोचना शुरू करते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, इसने यूं किया, सो फलाना भी तो था, यूं था, ऐसा हुआ। फिर हम सो गए, फिर हम सोए तो वापस कुछ यहाँ तक आए, लेकिन सुबह उठे हमने कहा यार अभी फारिग हैं, क्यों ना कुछ वाहियात चीजें मजीद सोच लें। हमने फिर सोचना शुरू किया, कल रात मैंने रात तो यहाँ तक बात सोची थी, अब मुझे ख्याल आया अभी आज के पूरा दिन मौजूद है, तो क्यों ना बर्बाद किया जाए, यहाँ तक सोचते हैं। अब फिर रात हो गई, चलो यार अब सो जाते हैं। अब सोच कर फिर हम यहाँ तक आए थे, और सुबह उठे दूसरे दिन में यार क्यों ना दोबारा, लेट अस कंटिन्यू, एंड देन वी कीप ऑन डूइंग इट। उसके बाद कहते हैं यार डिप्रेशन की कोई दवा पता है आपको? You know what? If you just leave it, you will find you will go back to this. Okay? यार कोई टेक्निक बताएं कामरान साहब, कोई NLP की कोई टेक्निक हो जिससे मैं कंट्रोल करूं। मैं आई एम टेलिंग यू कॉमन सेंस टेक्निक, जस्ट स्टॉप, रिलैक्स। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, टेल मी व्हाट शुड आई डू,
And I simply give them one answer, one word answer. I say relax. Okay, there's a नहीं कुछ बताएं कोई टिक. It's like I'm telling you, just relax. मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ बाय द वे, आज बहुत अच्छे यहाँ पे लाइक बारिश हो रही है सुबह से, और इट्स लाइक आसमान पे पूरे बादल हैं. अब मैं अगर फर्ज करूँ परेशान होकर बैठ जाऊंगे, यार ये बादल जो आ रहे हैं, और यार अगर ये बादल इधर से आने के बजाय ये बादल इस तरह से आए तो ज्यादा अच्छा होगा. विल इट हेल्प? विल इट मेक थिंग्स बेटर? It never helps, it never works, but somehow people get into that. So I want you to try this. It's like to think about, stop looking for a reason to feel good. And ये जो external reasons होते हैं ना, यही indications होती हैं by the way, जब हम Facebook के ऊपर अपनी certificate लगा के दिखाते हैं. See? So people click and people like that, and then we feel good. Okay, हमारा जो serotonin होता है, it keeps on flowing, and we feel good because people are liking us. If you're doing it with the objective, with a clear objective, knowing why you are doing it, if you're doing it just so you can feel good, so other people can praise you, that's not a very good strategy. Okay. Nazakat says, I like your second accent. Which one is that, Nazakat? Actually, I have many accents. Okay. So, which you are explaining. Okay. Thank you very much. What else can I say? Okay. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसीलिए इतनी ये सारा कर रहा था ताकि कोई तो मेरी तारीफ करे. सब चुप करके बैठे थे, मैं सुबह से बोल बोल के थक गया, इंतजार में था कोई मेरी तारीफ करे. नजाकत आपने बोला, मेरा दिन बन गया. सारा दिन अब यही मैं सोचता रहूंगा, नजाकत ने कितनी नजाकत से मेरी तारीफ की. क्या okay? और उनके अखलाक में इतना अखलाक नहीं था कि वो मेरी तारीफ कर देते. हद होती है. साजिद की संजीदगी के ऊपर मैं परेशान हूँ. जहूर ने तो अपना जाहिर ही नहीं किया, अपने आप को कैमरा बंद करके बैठे रहे. हिना के अदल से मैं परेशान हूँ, एक लफ्ज नहीं बोला. मैंने इतनी मेहनत करी. और निदा की अदा को देखकर हा 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 कर रही हैं. Okay, so let's do this. This is a very quick technique. Let's quickly do it. Okay, and I want you to think of a time. Think of a time when you felt really good, really good. Go back to that time in your mind. Okay, close your eyes. Close your eyes and recall a time when you felt good. A time when you felt really, really good. See what you were seeing, hear what you're hearing, feel the way you were feeling. Make this image bigger, make it brighter, double the size. Bring that image closer. Imagine yourself stepping into that memory. Relive what you were experiencing. देखो जो उस वक्त देख रहे थे, सुनो जो सुन रहे थे, महसूस करो जो उस वक्त महसूस कर रहे थे. देखो, सुनो, महसूस करो जो उस वक्त कुछ हो रहा था. And as you do that, allow that feeling to grow stronger and stronger. Give this feeling a color, any color you like. And as you give that color, allow that feeling to spread into your every muscle, every bone, every fiber in your body. Let that feeling grow stronger and stronger and stronger. And as that feeling gets stronger and stronger, allow that feeling to multiply. कैसा अगर तुम्हारी ये feelings double हो जाए? How will it be अगर ये feelings 4 गुना ज़्यादा strong हो जाए? Keep notice that feeling, where it starts and where it ends. Take that beginning and connect it to the end, and allow that feeling to spin inside you. Allow that good feeling to spin faster and faster and faster, faster and faster, and allow that beautiful color, this good feeling in this beautiful color to spread into your body. Let it spread into every muscle, every bone, every fiber in your body. Let it spread even more. Make it stronger and stronger and stronger. As it gets stronger and stronger, more and more, faster and faster. Keep that feeling spinning faster and faster. As it spins faster and faster and faster, I want you to hold that feeling. Set an anchor for yourself for this good feeling. You can use that same positive anchors. This feeling will stack with that. As it does, set that anchor. And now I want you to think of a future time, a number of times, maybe in your home, at your office, in your workplace. I want you to see yourself in several situations where you see having this good feeling is spinning inside you faster and faster, faster and faster. The moment you enter your home, this feeling comes. The moment you wake up in the morning, this feeling comes. And allow this feeling to grow stronger and stronger and stronger each and every day. Okay, now open your eyes, come back. Okay, how do you feel, by the way?
this is a good feeling. Sir, is it self-hypnosis? Nida says yes, all hypnosis is self-hypnosis. This is a technique. सर ये सारी टेक्निक्स आपकी एक दो दफा जब आपके साथ कोर्सेज किए उसमें मैंने अटेंड किए, लेकिन इस बार बहुत इंटेंसली मल्टीप्लाइड इफेक्ट के साथ मुझे फील हो रही है. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you, sir. Sure. So, it's like repetition. Remember, repetition is the mother of skill. Okay, repetition. कभी सोचा एक बात, by the way, अल्लाह ताला को हमारी नमाजों की जरूरत है, हमारे रोजों की अल्लाह ताला को जरूरत है, हमारी नमाजों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई फायदा है, या हमारे ना पढ़ने का कोई नुकसान है? फिर हमें नमाज 5 बार पढ़ने का हुक्म क्यों है? हमारी नमाज फिर किसके लिए है? अपने लिए. repetition. कब तक? नहीं भाईजान, अपने लिए नहीं होती नमाज. कब तक रिपीट करना है? मरने तक. और हम कहेंगे यार बस वो एक बार को यूं प्रोग्राम कर दे, मुझे यूं हैप्नोटाइज करके मेरे दिमाग यूं प्रोग्राम कर दे, बस सुबह खुद मैं फजर में उठूं, यूं करके मैं जाऊं और यूं खड़ा हूं, पता भी ना हो मुझे, बस मैं नमाज पढ़ के वापस आऊं, आके सो जाऊं, ऐसा कोई हैप्नोटाइज कर दे. नमाज भी जो है ना, मैं शऊर के साथ ना पढ़ूं. Yeah, and I'm telling you, by the way, because I've heard these kind of things from people a lot of times. Okay, so let's move on. Just a couple of techniques. Once you know हो क्या रहा है, it becomes much easier to change. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen. And it's an honor to work with someone of his caliber. If you think about Kamran Sultan, he is fantastic, and I highly recommend him for doing the seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan, in NLP, you won't find any better. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. Okay? So, go see Kamran Sultan. He's a great guy and he does fantastic programs. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Now this is changing bad feelings. Okay. Not only that we can enhance good positive feelings, we can also get rid of bad feelings. Okay. People often end up making bad decisions when they are feeling bad. Many years ago, I read a book, The 1 Minute Salesperson. उस किताब में जो authors हैं, उन्होंने एक बड़ी छोटी सी quotation थी. It's like people who feel good produce good results. Okay. And people who feel bad produce bad results. So people who are feeling bad often end up making bad decisions. और फिर उनके जो बैड डिसीजंस होते हैं वो उनकी जिंदगी पे तरह तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं. So if you're feeling bad,
Okay, one of the things that I strongly recommend is, don't make a decision in that state. It won't be a good decision. Those are the decisions जो कि इंसान बाद में regret करता है. कभी आपने सुना है जैसे होता है ना, लोग मुफ्ती साहब को कॉल करके कह रहे होते हैं, हम टीवी पे देखते हैं अक्सर, जी वो तलाक दे दी थी, गुस्से में दे दी थी. ओके, तो मुफ्ती साहब के कभी ऐसा होता है कि किसी को मोहब्बत में आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, इतनी स्मार्ट, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यारी, बच जाओ तुम्हें तलाक तलाक तलाक, भी ऐसा भी होता है. ओके, जो तलाक देता है गुस्से में ही दे रहा होता है ना. सो जो डिसीजन इंसान ले रहा होता है वो, it's like when people are feeling bad, they make bad decisions. So, and sometimes कोई चीजें होती हैं, हम उसे इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट करते हैं, हमारे जहन में कोई सोच आ जाती है, फंस जाती है सोच, रिपीटेडली हम उसको करते रहते हैं, उस पर हम फोकस करना शुरू कर देते हैं, एज अ रिजल्ट हम बुरा फील कर रहे होते हैं. ओके, नाउ एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर मैं आपको ये चीज टीच कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता. अंडरस्टैंड दिस. अगर कोई डेंटिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है उसके दांत में कीड़ा नहीं लग सकता. अगर कोई हार्ट सर्जन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती. हम सब इंसान हैं. ओके, एक बहुत बड़ी गलत फहमी ये हो सकती है किसी को, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, किसी आलिम दीन ने अगर कोई गलत बात कर दी तो लोग बस उसके ऊपर उसके खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं. इंसान ही रहता है वो इल्म के बावजूद. आलिम दीन है तो अल्लाह ने उसको उस इल्म की वजह से उसको मर्तबा दिया है, मगर वो बहरहाल इंसान ही है. उससे कोई गलती, उससे खता, उससे कोताही, उससे गुनाह हो सकता है. ओके, इस चीज को मत भूला करें. जब हम होता है, मैं देखता हूँ कितना लोग जो है ना, किसी आलिम से कोई बात हो गई और सोशल मीडिया पे बेदबादब उसकी गीबत और तोहमत शुरू हो जाती है. हमें इस चीज का एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, और स्पेशली अगर हमारे मसलक का नहीं है तो फिर तो हमारे ऊपर जैसे फर्ज है ना, उसके लिए उसकी गीबत हमारे ऊपर फर्ज हो गई है. हमारे मसलक का नहीं है बट कलमा गो है. ओके, हमें पता नहीं है कि अल्लाह उसको किस बात पे बख्श दे और हमारी किस बात पे पकड़ हो जाए. हम समझ रहे हैं. मैं तो अक्सर लोग से, वो जी 72 फिरके होंगे, उनमें से एक फिरका जन्नती है, वो हमारा है. यार एक बात मुझे बताओ, अल्लाह ताला इस तरह से करेगा, अच्छा जी ये वाले फिरके वाले जो हैं ये सारे इधर जन्नत की तरफ जाए और बाकी 72 इस तरफ. ओके, उन सब के दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी. उनको जो अल्लाह ने इल्म दिया उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया, इखलास के साथ किया, अल्लाह के लिए किया, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए किया, और अल्लाह के गए. और ये जो थे, ये ना नमाज पढ़ते थे, ये इस फ़िक़े वाले थे, इस फ़िक़े को फॉलो करते थे, लिहाजा सब इधर जन्नत. आई मीन अल्लाह ताला का इंसाफ ऐसा है. क्या समझ रखा है हम लोगों ने यार. बहरहाल, coming to this, changing bad feelings. Think about somebody who annoys you or intimidates you or irritates you. Okay, this could be a neighbor, a boss, a colleague, could be any person. Okay, then make an image of him or her and see that person look at you in whatever way they do, and when that person is annoying you. So it's like when जब वो कोई शख्स आपको annoy कर रहा हो, तंग कर रहा हो, उसके जो चेहरे के expressions होते हैं. Okay, I want you to imagine that person, hear that person say whatever they say, and notice the bad feeling that happens in your body. Okay, so you can do it right now, by the way. Do it, you will experience it yourself. Okay, सोचें किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसकी बातों को सुन के आपको बड़ा बुरा फील करता है. उसका उसके वो चेहरे के तासुरात, उसकी वो लहजा, उसका वो अंदाज, something that really makes you feel bad, something that really annoys you. So if you're already going through it, great, pick that person, that experience, doesn't matter. Okay, now what you do is, एक चीज जरूर रियलाइज करना, जब हम ये कहते हैं ना कि कोई दूसरा शख्स जो है वो हमें कर रहा है, हम इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं कि हम विक्टिम हैं और वो दूसरा जो है कॉज है. जो अगर इस वक्त right now, as you are thinking of that person and you are feeling bad, by the way, how many of you here right now, as you are thinking about that person और उसका जो behavior है right now, how many of you have experienced that bad feeling or negative feeling? Type 1
if you felt bad. Oh, one. Yes, one. Now notice एक चीज, इस लम्हे में जब आप यहाँ पर बैठे हुए ये एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या वो शख्स यहाँ पर मौजूद है? क्या इस वक्त वो शख्स वो बिहेवियर कर रहा है? No. तो अगर आप फिर भी बुरा फील कर रहे हैं, तो ये फीलिंग कहां से आई? इस फीलिंग का असल सोर्स क्या है? आपकी अपनी सोच के अलावा। जब तक आपने उस शख्स के बारे में नहीं सोचा था, जब तक मैंने उसके बारे में आपको नहीं कहा और आपने नहीं सोचा था, डिड यू हैव एनी फीलिंग फॉर दैट? No. लेकिन हम करेंगे क्या, जो हमने फर्स्ट पे हम बात करें, जी वो फलाना शख्स जब यूं करता है ना, इस वजह से मुझे ऐसा फील होता है। दैट्स द रॉन्ग थिंग। जब मैं बुरी चीज सोचता हूं तो मैं बुरा फील करता हूं, जब मैं अच्छी चीज सोचता हूं तो मैं अच्छा फील करता हूं। जो मेरी फीलिंग्स हैं मेरी सोच से आ रही हैं। ये चीज समझ में आ रही है आपको? गो के हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दूसरे शख्स की वो शख्स तो है ही नहीं। इवन मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि किसी शख्स की बात को सोच के उनको बुरा फील होता है, जिसको मरे हुए 30 साल हो चुके हैं। एक शख्स को मरे हुए 30 साल हो चुके हैं, उसका अल्लाह ताला के मामला चल रहे हैं, जो भी उसके साथ हो रहा है, मगर यहाँ दुनिया में बैठा हुआ एक आदमी उसका 30 साल पहले का किया हुआ कोई अमल याद करके इस वक्त बुरा फील कर रहा है और उसको बुरा समझ रहा है। इसे कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन। ओके, सो इस चीज को अपनी वोकैबुलरी से इस बात को निकाल दो, इस सोच को कि तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं इसकी जिम्मेदार कोई दूसरा शख्स है। ओके, इसकी आपकी अपनी सोच है, मेरी सोच है जो मुझे तंग करेगी, आपकी सोच है जो आपको तंग करती है। जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी अपनी सोच होती है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मेरी सोच होती है। गो के मुझे लगे कि कोई दूसरा है, जो मैं आपसे बार बार एक मजाक के तौर पे अर्तगरल कि जी हम देख रहे हैं, हम वो उसको रियल समझ रहे हैं, रादर देन रियलाइजिंग कि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, जिसमें कुछ एक्टर्स हैं जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, वो असल लोग नहीं है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जहन में हम किसी शख्स के बारे में सोचा, वो मूवी हमने दिमाग में चलाई एंड वी स्टार्ट फीलिंग बैड। I want you to try something before we do a technique. I want you to just notice this thought. Pay attention. Close your eyes. Close your eyes right now. Okay. And I want you to just notice this thought in your mind. Focus on your own thoughts. Without labeling it as a good thought, as a bad thought, without labeling it as a wonderful thought. No judgments, no labels. Just keeping it's a thought. And just see it in your mind that it is just a thought, just a thought. बगैर किसी लेबल को लगाए, माजी की है या मुस्तकबिल की है या हाल की है, या अच्छी है या बुरी है, या अच्छे शख्स की है या बुरे शख्स की है, या अच्छे इवेंट की है, कोई, ये सारे लेबल्स हैं जो हम लगा रहे हैं, ये सारे जजमेंट्स हैं जो हम उस पर पास कर रहे हैं। इफ यू जस्ट रियलाइज, जो भी दिमाग में जहन में सोच चल रहा है, ये एक सोच है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड look at it only as a thought and notice how you feel.
Okay, now open your eyes and tell me how you feel. Nida says, I feel free. How do you feel when you just see it for what it is? Priya says neutral. Batul says feel nothing. Nazakat says feel happy. Sufia says felt ashamed on what bad I thought. Fitrat says normal. So मैंने आपसे, it's like Zahur says relieved. Sajid says can't explain. Better control on good. Sufia says and felt happy when thought good. Okay, you thought good, so you felt better. जिस वक्त हमने कहा it's a good thought, हमने एक लेबल लगाया. हमने कहा it's a bad thought, हमने एक लेबल लगाया. Good and bad. Loss performatives याद है? पर जब हमने कहा it's a thought. Okay, मैंने कहा ये ग्लास है. ओके, ग्लास है. मैंने कहा अच्छा ग्लास है, बुरा ग्लास है, कदीम ग्लास है, नया ग्लास है, बेहतरीन ग्लास है, बदतरीन ग्लास है. अब मैंने इस पे लेबल्स लगाना शुरू कर दिए, लेकिन मैंने कहा ग्लास है. ओके, सो एक सोच है, एंड दैट्स इट. आसमान से गुजरने वाला एक बादल है. मैंने कहा जी ये बादल जो ये अजदहा है, ये जो बादल है ये हवाई जहाज है, ये फलाना, ये वाला जो बादल है ये पहाड़ है, और ये वाला जो बादल है ये अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, और ये वाला जो बादल है ये रूहानी बादल हो गया. ये बादल है. आपने वो देखा है जो बच्चों के लिए नगेट्स के आते हैं, मुर्गी और मछली और स्टार और बॉल और तरह तरह के वो नगेट्स के शेप्स होते हैं, लेकिन इन ए सेंस वो जो नगेट है इट्स जस्ट चिकन. ओके, अगर चिकन नगेट्स है, बच्चा जो देख रहे हो ये तो मैं डक खा रहा हूँ, और ये मैं स्टार खा रहा हूँ, और ये मैं शिप खा रहा हूँ, बट इट्स जस्ट अ नगेट. इट्स जस्ट चिकन. दैट्स द एसेंस ऑफ इट. सो वो जो सोच आ रही है ना, जैसे हमने अच्छी सोच और बुरी सोच और डरावनी सोच और ख्याल, खाली सोच है. इस चीज को अगर इन 3 दिन से, इस प्रोग्राम से, अगर आपने इस बूट कैंप से ये चीज अगर आपने समझ ली, और अपने आप को अगर खाली आपने ये चीज रियलाइज कराना शुरू कर दी रिपीटेडली, यू विल फाइंड आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा पीस आ जाएगा, यू विल बी सरप्राइज्ड. वो बहुत सारी टेंशंस जो आपने पाली हुई हैं, यू विल फाइंड वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में सेटल हो जाएंगी. इफ यू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, अगर कोई शख्स हमें कोई याद आता है, कोई हमारा अपना गुजर गया, दुनिया से चला गया, हम अगर उसको सोच कर मिस करते हैं, तो वो जो मिस कर रहे होते हैं वो भी हमारी अपनी सोच का नतीजा होता है. जब हम उसके बारे में नहीं सोच रहे होते, हम उसको मिस नहीं कर रहे होते, हम अपनी सोच को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. तो उस सोच को ना सप्रेस करें, जबरदस्ती उसको हटाने की कोशिश ना करें, ना उसको चेयर करें. इफ यू जस्ट रियलाइज ये सोच है एंड यू अलाउ दैट टू पास, यू विल फाइंड वो जो बैड फीलिंग्स है दे विल गो वेरी क्विकली. So Sufia says, as much as I have learned from NLP, I'm much happier, alhamdulillah. जी नसर, what, कल किसी ने एक वीडियो भेजी थी अल्लामा इकबाल के उस पे कि जी इकबाल को इकबाल हमें वारे नहीं आता. इतनी खूबसूरत उन्होंने बातें की थी कि मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में अभी जो इकबाल डे भी मनाना ख़त्म कर दिया गया है, और उसके ऊपर भी, बट या इकबाल की जो बातें थी वो हमें अब वारे नहीं आते कौम को ना, इसलिए जिस किस्म की इकबाल बातें करते थे, हमें क्या ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की. बट अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को समझो, ये चीज़ आपके काम आ जाएगी. ओके, इस पूरे प्रोग्राम से जो 3 दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं, ये आपके मैंने 8-9 घंटे ले लिए आपकी ज़िंदगी के, जो आपको वापस नहीं मिल सकते. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट टाइम बाय द वे. बट इस प्रोग्राम से, if you just get this understanding, if you just get this one realization
कि हमारी जिंदगी में हम जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम अपनी सोच को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम उस इवन दो वो सोच हमारी जिंदगी के रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिन साहब के साहिबा के बारे में आपने सोचा, वो साहब साहिबा रियली एग्जिस्ट करते हैं, उन साहब या साहिबा ने रियली आपको एनॉय किसी वजह से किया होगा, लेकिन इस लम्हे में अगर आपने उनको सोच के अच्छा या बुरा फील किया, या आपकी अपनी सोच का नतीजा है। अगर आप अपने आप को ये चीज रिमाइंड कराते रहें, यू विल फाइंड इट विल रियली हेल्प यू, इट विल डू यू इमेंस गुड। निदा says please play the last slide. Okay निदा, अभी मैंने आपको ये जो टेक्निक थी, अभी मैंने वो टेक्निक कंप्लीट आपको नहीं बताई थी. We'll come to this technique. If you want to play with this, okay, you can do this. Okay, for this person, if you want to do this, is an NLP technique. Now take the image and make it black and white, move it far off into the distance, make it much smaller, 1/8 its size, place a clown's nose on this person's face. Hear that person say whatever they say, but when they say it in Mickey Mouse voice. Okay, now imagine that person. Now it's आपके ज़हन से एक सोच का बादल गुजर रहा है. आप उससे अगर खेलने का इतना ही आपको शौक है, तो बजाय you feel bad, see if what happens when you do this. Take that image and make it smaller and smaller and smaller. Push it far and far away from you. Put a clown's nose on that person's face and see that person dressed up like a clown and speak like Mickey Mouse, and notice how you feel differently. Then distract yourself for a few moments and think about that person again, and you will notice that you will be feeling differently inside. Okay. So this is it from me. And if I will stop recording here, अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, I'll answer your questions. जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो कर ली. अगर if you want to proceed further, अगर आप मज़ीद NLP को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंशाल्लाह I'll be conducting my 90th NLP practitioner training from 24th of May. उसकी registrations already हो रही हैं. If any one of you who's attending it want to join, उसकी सारी details मेरी website पे मौजूद हैं. Okay, it will be an online program, completely, totally online program होगा. 21 दिन में होगा, 21 days. We'll have sessions like these, और जो चीज़ें हमने की हैं, we'll go into a lot of detail in all of those things, and you learn and develop a lot of skills. That's a certification training. उसकी certification जो है Society of NLP से होती है. Certificate is issued by Society of NLP from here in New Jersey. Or Richard Bandler, जो NLP के co-founder है, he signs that certificate. I sign it, and Richard Bandler also signs it, and John DeVale, जो president है Society of NLP के, they sign it, and you get that certificate after completion of that training. उसकी सारी details मेरी website nlp-pakistan.com पे है. You can go and check that. And मज़ीद आपको कोई उसकी मालूमात चाहिए, you can always contact me. मेरा WhatsApp पे जो पाकिस्तान का नंबर है 0300-219-8031. You can always contact me and send me a message, and if there's any question, I'll answer that. So thank you very much everyone for joining me. I'll stop the recording for this. अगर कोई question answers है, I'll take those questions after this. Neuro-linguistic programming brain through language. डीप अंडरस्टैंडिंग आती है अपने मुतालिक, अपनी ज़ात के मुतालिक और दूसरों के मुतालिक. This is one of the first things in my courses. ये जो चीज़ I have used one of your techniques in my sales and it closed. अब लगता है कि जो मेरा एक स्किल लेवल है, शायद मुझे वो पहले महसूस नहीं हो रहा था. क्योंकि I feel like I need it.
क्योंकि because I can. Look, I am way better than I thought I would be, you know. If you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran. Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him. Highly recommend. If you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan. Learn from Kamran. I transformed as a human being, as a mother. मेरी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव हुई विद माई डॉटर्स, माई रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड. इसके अलावा मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हुए. यहाँ से अपनी लाइफ को पीछे की तरफ देखता हूँ, 5 साल पीछे की, और आज जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो एक डिफरेंट इंसान की सूरत में अपने आप को देख रहा हूँ. Okay, everyone, welcome back. Thank you very much. I hope you enjoyed this. I hope you learned something useful. And as I mentioned, ये क्योंकि मेरी recording थी, I was just playing a recording मेरी previous training की. So, if you are interested, if you want to go further, learn with me, check my website first-institute.com. And Ramzan will share जो मेरा number है और Ramzan का number है. If you need more details about my programs, feel free to contact me, or you can ask Ramzan. Ramzan is one of my students. He can give you details on that as well. And thank you for joining this. And inshallah ta'ala, I'll see you sometime. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ji Ramzan, you want to say before we end the session? मैं कमेंट्स देख रहा था, लोगों के कमेंट्स देख रहा था, तो इस कमेंट से लोगों का पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आज का सेशन एंजॉय किया है. तो और एक किसी ने ये भी कमेंट किया है कि कामरान सर का जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत आउटस्टैंडिंग है. मैं आपको बताऊं कि कामरान सर की जब आप लाइसेंस्ड एनएलपी ट्रेनिंग के अंदर शामिल होंगे, जो कि 21 दिनों पर मबनी है, आप यकीन जानिए कि वो 21 दिन इतना क्विकली गुजरते हैं, इतने हंसी मजाक के अंदर गुजरते हैं कि मैं जब ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था तो मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब दिन खत्म होगा, कब वो ट्रेनिंग शुरू होगी. तो आई एम श्योर आप ये 21 दिनों की जो ट्रेनिंग है वो अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस आप हासिल कर पा रहे होंगे इंशाल्लाह. तो ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह इसी महीने से स्टार्ट होगी, लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग. अगर आप इस ट्रेनिंग के सिलसिले में मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कामरान सर से या मुझसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं. हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर. और मैं ये चलते चलते बता दूं कि अगर आप कामरान सर के मजीद कोई भी प्रोग्राम के बारे में कि वो कब ट्रेनिंग है, कौन सी ट्रेनिंग है, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं. अगर आप कामरान सर को इस नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो आप कामरान सर के जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप भी है और लाइफ कोचिंग के ग्रुप भी है, आप उस पर भी शामिल हो सकते हैं. कामरान सर के यूट्यूब के चैनल पर इस वक्त करीब 400 के करीब बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस अवेलेबल हैं. आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ पिछले 3-4 दिनों में. इंशाल्लाह ऐसे सेशंस और भी होते रहेंगे और आपसे मुलाकात होगी लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिस